Hello, class 10th. This is your first chapter in the book Footprints Without Feet, and the first chapter is A Triumph of Surgery. Okay, so this is written by James Herriot, and it's actually the pen name. His real name is James Alfred White. It's like this: James Alfred White. Okay, this is actually the name of the narrator or author, you can say. Okay, so he is actually a veterinary surgeon and a writer. Okay, so this is a sort of comic, a very light story. So triumph means victory. ठीक है, so this is what is there, that victory, or you can say the uh, that victory over that surgery. Okay, so here in this story there are basically three people. The main, so Tricky, a small dog, then her mistress, Mrs. Pumphrey, and the narrator, the author. Okay, so what happens in this story, in short I can tell you, is that there's a dog named Tricky, and because that dog was very close to this his mistress, so she used to feed him everything, and he had become very fat and of course ill also. And to reduce him, this narrator has taken this dog with him, and later what happened, that is there in this story. Okay, so in the starting what happened, that I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. So here I is the narrator. ठीक है, narrator को ही बार बार I कहा गया है. So mistress is Mrs. Pumphrey, and he was very worried about this dog, and ही वॉज एक्चुअली शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. वो जिस तरह का दिख रहा था उस पर थोड़ा शॉक्ड था. क्यों? क्योंकि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. यू नो वट इज़ अ सॉसेज? इट्स अ इलोंगेटेड टाइप ऑफ मीट पीस दैट इज़ देयर. एंड वो इतना फूल चुका था, इतना फैट उसमें आ चुका था कि वो इस तरह का दिख रहा था, एंड विथ लेग एट ईच कॉर्नर, की बस सिर्फ पैर दिख रहे हैं. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. So his eyes were red. Okay, this dog, his eyes were red, and they were watery discharged. When you can see dogs which whites are, like you can say, we say na, nose say or eyes say, tears type of चीज़ें निकलती हैं, that. And he was staring straight. So Mrs. Pumphrey hasn't to explain. He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have giving him some extra between meals to build him up. So मिसेस फम्फ्री को ये नहीं दिख रहा था कि वो प्यार में उसे इतना ज़्यादा खिला चुकी थी. उन्हें क्या लग रहा था कि वो बीमार हो गया है, सो इस वजह से उसे और ज़्यादा चीज़ें खिलाने लगी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो और ज़्यादा फैट बढ़ाता, लाइक कॉड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. मतलब एकदम प्रॉपर इंसानों की तरह ट्रीट कर रही थी. एंड शी वॉज गिविंग दिस डॉग एवरी पॉसिबल थिंग टू बिकम फैट इन फैटर, एंड not a little bit of exercise this dog was doing. Okay, so जो नरेटर था उसने ऑलरेडी बोला हुआ था कि मैंने आपको पहले बोला था यू हैव टू कट डाउन सम स्वीट थिंग्स, बट क्या हुआ, कुछ किया नहीं. दिस डॉग लव्स क्रीम केक एंड चॉकलेट, एंड बिकॉज इतना ज़्यादा प्यार करती थी ये मिसेस पम्फ्री, दैट शी नेवर रिफ्यूज्ड हिम. रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाई, और जो वो मांगता था उसको सब कुछ देती थी. ठीक है, एंड देन द ट्रबल हैज़ स्टार्टेड. ट्रिकी नॉट ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. उसका सिर्फ ये नहीं था कि उसको भूख बहुत लगती थी, ग्रीड करता था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड.
मतलब उसे जिस टाइम पे खाना दे दो वो उस टाइम पे उस तरह की चीज़ें खा सकता है, लेकिन उसे कभी ये नहीं कहेगा कि अगर दिन में भी दिया 2 घंटे बाद भी दो तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था. सो सिर्फ लालच ही नहीं थी इस डॉग के अंदर, वो दिन में कितनी बार भी कुछ भी खा सकता था. ठीक है. एंड देन नरेटर ने पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि अब इतनी चीज़ें खिला रही हूँ, सो एक्सरसाइजेस क्या है. देन शी सेड दैट लिटिल वॉक्स यू कैन सी, बट नॉट दैट मच, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करा रही थी. ठीक है. सो एक तो इतना ज़्यादा खिला रही थी, एक्सरसाइज नहीं दे रही थी, एंड बिकॉज ऑफ so much fat in him, he had started getting muscular pain in the lower part of the back. This lumbago means that lumbar region जो होता है वहाँ पे उसे पेन स्टार्ट हो चुका था. तो ज़्यादा कुछ मतलब रिंग थ्रोइंग, यू नो, वी थ्रो द रिंग एंड दे ब्रिंग इट बैक एंड ऑल, ये सब कुछ बंद था, कुछ नहीं था. ठीक है. So I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. You have to keep your heart hardened and keep him on a very strict diet. So directly narrator ने बोल दिया कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा बहुत टफ उससे बोल रहा हूँ, बट बिकॉज ही वॉज अ वेटनरी सर्जन, सो ही न्यू कि अगर अब इससे ज़्यादा वो कुछ खाएगा तो इसकी बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. तो उन्होंने डायरेक्टली बोला आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू हार्डन योर हार्ट एंड यू हैव टू कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. ओके. So Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heroid. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She sets off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. So when she was going from there, ऐसा लग रहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सब चीज़ फॉलो करेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है. दैट वी विल रीड लेटर. लाइक जब गई तो ऐसा लग रहा था बहुत डिटर्मिंड है, एंड शी विल गो एंड शी विल पुट this dog into a very strict diet and proper exercise. आप जैसे ही वहाँ से निकली, I watched their progress with growing concern. Chicky was loitering along in this little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So this dog was wearing a very nice coat and everything, and this dog has every wardrobe फॉर एवरी सीज़न, सब कुछ था उसके पास. एंड देखने लग गया था कि जो ये डॉग है ट्रिकी, ही वॉज नॉट इन गुड हेल्थ एंड यू नो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, सो ही वोंट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली एंड ही विल हैव शॉर्टन ऑफ ब्रेथ एंड ऑल. सो ये सब कुछ का डर शुरू हो चुका था एंड एक्सपेक्टेड था. एंड आफ्टर सम डेज देयर वाज अ कॉल फ्रॉम मिसेस Pumphrey दैट दिस शी वॉज वेरी extremely worried and ट्रिकी कुछ भी खाना बंद कर चुका है. इवन ही रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेज. साथ में ही हैज स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड ऑल. ही स्पेंड ऑल द टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग, लाइक थक जाता था, इतना वेट था. सो ही वुड जस्ट लाई एंड पैंट, शॉर्ट ब्रेथ होती थी, एंड ही नेवर वॉन्ट टू वॉक और डू एनी थिंग. आलसी हो चुका था एकदम पड़े पड़े. ठीक है. सो I had made my plans in advance. The only way to get Tricky out from the house for a period, I suggested that he has to be hospitalized for some fortnight to be kept under observation. So narrator ने directly बोला that dog को तुरंत 14 days के लिए at least we have to keep him into hospital and we have to keep him under proper observation. देखने के लिए कि क्या problem है क्या नहीं. So this lady, she was not happy about these things and she thought that अगर dog भी चला जाएगा तो how she is going to live, she will die and all those things. And उसे ये भी पता था कि वो रोज़ उसे मिल भी नहीं पाएंगी. ठीक है. बट दिस narrator, he took a firm decision कि Tricky is very ill and this is the only way to save him. अगर नहीं किया तो ये बहुत लेट हो जाएगा and then we won't be able to do anything. So it was best that without any delay we take him and hospitalize him. So this narrator, he marched out to the car carrying this little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed,
his night bed, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror. Before I turned the corner of the drive, everybody was in tears. So what happened? This and जैसे वो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे हॉस्पिटल था, जैसे वो वहाँ पे लेके गया तो सब लोग आए, ठीक है, जो वहाँ पे स्टाफ था, एंड दे सॉ दैट दिस कार हैड लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी, बिकॉज शी वॉज रिच एंड शी हैड एवरी पॉसिबल थिंग दैट she has given this dog. So what all the things were there? There were night cushions, day cushions, rubber rings, breakfast bowl, मतलब अलग अलग तरह से उसका बाउल था, and everything was very lavish, ठीक है. And he had, I already told you that he has lot of coats and everything, ठीक. So of course when there was parting, there was crying, there was tears, everything was there, but this was the best thing for this dog Tricky. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said. You haven't a kick in your butt. I think I know a cure for you. So what happened? This dog, he was in a very bad situation. The condition was very pathetic and he was just panting, and the time he had put a hand over his head. So what happened? This, when डॉग्स बिकम फ्रेंडली दे वैग देयर टेल, वही सबसे बड़ा निशानी होती है कि नाउ दे आर ओके विथ यू. सो उसने वो हिलाया दिस टेल, सो ही नो दैट कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, एंड he knew that he will get better. Okay, so there are certain questions related to all these things. They are also very easy. I will do it all in the end. Okay, so at the surgery is a place where a doctor or veterinary surgeon, they treat patients. Okay, so the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. So वहाँ पे बहुत सारे डॉग थे, ठीक है. जैसे एक नया डॉग आया, सबके सब उसने आके घेर लिया, एंड ट्रिकी लुक डाउन, बिकॉज अभी तक ट्रिकी ऐसे इस तरह से डॉग के साथ में तो था नहीं, एंड the all these dogs came and there was noise. So this Tricky, he looked down with dull eyes, and when he was put down, he was motionless on the carpet. The other dogs came and sniffed him around for a few seconds, and what they thought that it is something very uninteresting, मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ हम खेल सके. So they also ignored him, ठीक है. The other dogs ignored Tricky and thought that he is good for nothing. So this narrator, he made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. So वहीं पे रखा है, ऐसा नहीं कुछ अलग सराउंडिंग दिया, बिकॉज उनके साथ रहेगा तो उनकी तरह एडजस्ट कर सकेगा, ठीक है. देन फॉर 2 days he kept an eye on him, giving him food, no food but plenty of water, ठीक है. So खाना देना बंद कर दिया 2 दिन के लिए. So at the end of the second day he started showing some interest in his surrounding, वो जो surrounding थी जहाँ पे dogs थे, he started showing some interest. And on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. So he started playing, he started showing some interest, everything, when he heard that other dogs were also there in the yard. So when he opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. So what happened? After some days, he adjusted, or you can say he had now new phase in his life, because now he is surrounded by dogs and now he can adjust with them. उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ कैसे खेलना रहना, सब कुछ एडजस्ट कर सकता था. सो ही सॉ दैट ही वॉज इमीजिएटली गॉट engulfed by Joe. He is a greyhound, it's a breed, and with his friends, and उनके साथ घूमना, garden में निकलना, and all these things started. So he started running and everything with his fat. So later that day he was present at feeding time, and he watched while Tristan slopped the food into the balls. There was the usual headlong rush. See, when this narrator, he give food, everybody has to rush to eat.
ओके, तो और जो पीछे रह जाएगा वो उसको खाना कम या नहीं मिलना है. सो एवरीबडी न्यू, एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, सो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. सो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन फॉर द मील. सो इफ़ यू विल रन फास्ट, यू विल बी एक्टिव, देन ओनली यू विल गेट फूड. ओके. So when they finished, Tricky took a walk round the shining bowl, licking casually inside one or two of them. So next day an extra bowl was put for him. So next day क्या हुआ, एक extra bowl भी रख दिया गया, and this they were pleased to see him running in that way, like उन्हीं की तरह वो दौड़ने लग गया था. Okay, so from then on his progress was rapid. So now he knew that he need no medical treatment, एंड इसी तरीके से इन सब डॉग्स के सराउंडिंग से ही वो वापस से अपने पहली तरह से आ सकता है, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर अ प्रॉपर सर्जरी फ्रॉम हिम. ठीक है, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है अगर वो इन्हीं डॉग्स के साथ खेलेगा, उन्हीं की तरह एडजस्ट कर लेगा और उन्हीं तरह से रहना सीख जाएगा. Okay, so I am doing till here in this video. In the next video I will finish this chapter, and I will do all the short question and answer that is also given here in this book. Okay, so bye and take care.